অ্যাকচুয়ালি 4-5 দিন আমি ভিডিও দিতে পারছি না বিকজ আমার বাতিজি পাস করছে, তোমরা জানো, প্লেস করছে, তো ওইটার লেগে মানুষের গ্যাদারিং এর লেগে আমার ডিস্টার্ব হয়েছে। তো আজকে থেকে আবার শুরু করলাম। এখন ডেইলি একটা ভিডিও তোমরা ওয়ান ডে একদিন পর পর পেতে থাকবে, ক্লিয়ার? ওকে, সো আজকে আমরা যে শুরু করব এটা হলো সলভ দ্য সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন, সলভ দ্য সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন বাই ম্যাট্রিক্স মেথড। ওকে, স্টপ। Application of matrices in solving a system of linear equations. Clear? Matrix form of a system of equations. तो matrix form में कैसे लिखना है? It is a simultaneous equation of two variables. It is a simultaneous equation of two variables. A1x plus b1y equals to d1. A2x plus b2y equals to d2. Clear? This may be a simultaneous equation. এটা কি simultaneous equation? This may be expressed in the matrix form as A into x equals to b. Ax equals to b. What is it? M is coefficient of x column wise, coefficient of y column wise. That is x का coefficient क्या है बोलो? A1, A2, B1, B2. So what is a coefficient of x column wise and coefficient of y column wise? Clear? And what is x? X means variable, always column wise. So what is the variable? X and y. So x, y. Clear? And what is b? B is a constant part. D1 and D2 always column wise. सब कुछ column wise. D1 and sorry. B means x और हाँ. तो B means D1 and D2. Clear? So another example. अगर मैंने एक example लेता है सर, जब हम देखो, suppose if I to give a particular example, 2x plus 3y equals to 4. X minus y equals to say 6. Clear? Then this may be expressed in the form ax equals to b. What is a? M is what? Coefficient of x. बोलो क्या होगा बोलो? 2 and 1 column wise. 2 and 1. Coefficient of y 3 and minus 1. Take sign also. Clear? समझ में आ गया? Sign भी लेना है. And x तो variable xy and constant is what? 4 and 6. 4 and 6. That is, we can express any simultaneous equation in matrix form. Okay? Start. Similarly, the system of three equations in the unknowns what? तीन लाइन का, तीन का x, y and z. Three unknowns are there. Suppose मैंने लिखा देखो a1x plus b1y plus c1z equals to d1. a2x plus b2y plus c2z equals to d2. a3x plus b3y plus c3z equals to d3. Clear? So this may be expressed in the matrix form as ax equals to b, where a equals to what? a1 column wise, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. Clear? x, capital X का मतलब वेरिएबल, कॉलम वाइज, x y always column wise, ये याद रखना, हमेशा कॉलम वाइज, ठीक है? And b is what? Constant part. बोलो d1, d2, d3. क्यों की सर? why? अब तुम बोलोगे सर क्यों? देखो इधर, जैसे ये मैट्रिक्स है, ऐसे मैंने लिखा ax equals to b, ध्यान से देखना। तो ये क्या था? a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। इधर क्या है सर? b x का मतलब x y z और कांस्टेंट का मतलब d1, d2, d3, ठीक है ना? अभी अगर इंटू करता है तो रो इंटू कॉलम a1x प्लस b1y प्लस c1, इधर इंटू करो रो टू कॉलम 1 a2x b2y प्लस c2, a3x प्लस b3y c3z, ठीक है? ये मैट्रिक्स आ गया, इक्वल्स टू क्या है? d1, d2, d3. Then we know by equal matrix. This equals to d1, this equals to d2, this equals to d3, मतलब a आ जाएगा. So we can transfer a simultaneous equation in matrix form, or you can convert in matrix form into simultaneous form. Okay? Okay. Solution of non-homogeneous equation. So what is homogeneous? What is homogeneous? देखो यहाँ पे ax equals to what? b. ax equals to b ना? Any simultaneous equation can be expressed in the form what? ax equals to b. अगर b का वैल्यू 0 है,
मतलब if B is a null matrix, जैसे ऐसा a1x plus b1y equals to 0, c1x d1y equals to 0। ध्यान से देखो, तो B जो है, A जो है 0 0 माने it is a what, null matrix। B का 0 0 माने it is a null matrix, then it is called homogeneous equation। then that type of equation is called homogeneous equation। clear? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन माने कि बीटा 0 নাই। क्लियर और नॉट? पूछो तो हां, और लिखा है कि सर नॉन होमोजेनियस मींस व्हाट, सिंस नॉन होमोजेनियस means what, means what, b not equals to 0। क्लियर? तो मैंने क्या बोला देखो, मन दिया बुझो जी। a number 1, if a is a non singular matrix माने determinant of a cannot be 0, then the system of equations a into x equals to b has a unique solution। मतलब x का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू x का वैल्यू आएगा 1, y का वैल्यू, जितना वेरिएबल होगा सबका एक एक वैल्यू आएगा। क्लियर? যতটা ভেরিয়েবল থাকবে সবটার একটা একটা করিয়া ভ্যালু আসবে। ইউনিক সলিউশন given by x equals to a inverse b। এই যে अच्छा ये प्रूफ करा আছে, टेंशन নাই। तो देखो we have ax equals to b, ठीक है? तो a is what, नॉन सिंगुलर। तो एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट व्हाट, इनवर्स। कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो सिंस a is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन a इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर? तो देयरफॉर मैंने दोनों तरफ प्री मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई की करलाम, a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। क्लियर? तो a inverse into a into x, तो a inverse a into x equals to a inverse into b। a inverse a is what, identity matrix I। देखिए a inverse into a कितना होगा, identity matrix I into x equals to a inverse into b। I into x माने x, तो x equals to what, a inverse into b। a inverse लेकर हमने लास्ट क्लास से सीखी। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मुझे आता है adjoint by determinant of a, which gives the solution। clear? Okay, next theorem number 2, let a into x equals to b be a system of equations। number 1 ध्यान से देखना, if determinant of a not equals to 0, that is it is a non singular matrix, is not it, then the system is consistent and it has unique solution given by x equals to a inverse, जो मैंने पहला थ्योरम में समझाया। if determinant of a not equals to 0, then the system is consistent and it has unique solution। clear? number 2, if determinant of a equals to 0, that means the matrix is singular। ठीक है? if determinant of a equals to 0 and adjoint a into b also 0, adjoint a is what, adjoint निकालना कैसे निकालता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्लियर और नॉट? अच्छा, adjoint a into b is also a 0 means null matrix, then the system is also called consistent and it has infinitely many solutions। तब x का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, y का इनफाइनाइट होगा, z का भी इनफाइनाइट होगा। क्लियर? जितना भी वेरिएबल सबका सॉल्यूशन इनफाइनाइट। क्लियर? एंड केस नंबर 3, if determinant of a equals to 0 but adjoint a into b not equals to 0, ठीक है, adjoint a into b not equals to 0, then the system is inconsistent मतलब it has no solution। clear? I repeat, if determinant of a not equals to 0, then the system is called consistent and it has unique solution। मतलब x जितना भी वेरिएबल होगा सबका एक एक वैल्यू आएगा, যতটা ভেরিয়েবল থাকবে সবটার একটা করে ভ্যালু আসবে। ক্লিয়ার? নেক্সট নাম্বার 2, if determinant of a equals to 0 and adjoint a into b also equals to 0, then the system is called consistent and it has infinite solutions। clear? number 3, if determinant of a সমান 0 and adjoint a into b is also 0 not equals to 0, then the system is inconsistent and it has no solution। clear? okay, तो আমরা কি শিখলাম যে if दो नंबर जो केस था सर, determinant of a equals to 0 and adjoint a into b is also 0 then the system is consistent and it has infinite solution। तो infinite solution निकालने का तरीका क्या है देखो,
In the case 2, to find the infinitely many solutions, ध्यान से सुनो, to find the infinitely many solutions, we replace one variable, say z, जैसे तीन वेरिएबल था x, y और z, ठीक है? तो सपोज x को भी पकड़ सकता है, y को भी, z को भी, x में ধরতে পারো, y রেও এবং z কোনো একটা z রে। তো সাপোজ আমি z রে কি ধরলাম, we replace one variable say z by some real number say k, by some real number say k. Then taking any two out of these equations, we solve by the matrix method. We solve by the matrix method. क्या करना है, एक वेरिएबल किसी को भी तुम आर्बिट्ररी रियल नंबर के पकड़ लो, আমরা কি করব, যে কোনো একটা ভেরিয়েবলে আর্বিট্রারি রিয়েল নাম্বার কি ধরলাম k, then taking any two out of these equations, पहले से मैं पढ़ रहा हूं, we replace one variable say z, ठीक है, by some real number say k, then taking any two out of these equation, जैसे दो बचा ना, क्या पकड़ लिया, तीन इक्वेशन था, कोई भी दो इक्वेशन, যে কোনো দুইটা ইকুয়েশন লইবাই, क्योंकि একটা তো অলরেডি নাম ধরি দিয়া দিছি আমি, so by taking any two of these equations, we solve by matrix method. Clear? These solutions together with z equals to k give the solution of the given system. এইটা আমি একটা एग्जांपल পরে বুঝাইমু how to solve the consistent but infinite solution with proper example. ठीक है? तो पहले हम लोग शुरू करते हैं सर how to solve the simultaneous equation by matrix method. Okay? तो एग्जांपल नंबर 1 मैंने छोटा से शुरू किया सर, solve by matrix method. solve by matrix method. 5x plus 7y plus 2 equals to 0, 4x plus 6y plus 3 equals to 0. Clear? The given simultaneous equation of how many variables? Two variables. Clear? So the given system is 5x plus 7y equals to -2, 4x plus 6y equals to -3. हाँ? अब इसको कहाँ पे कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स, which can be written in matrix form as ax equals to b, where m is what, coefficient of x column wise, बोलो 5 4 5 4, y का coefficient 7 6, x means variable x y, and b means what, constant -2 and -3. Clear? तो ax equals to b. clear? Okay? Okay. अभी देखो नाउ, अभी हमको पहले क्या निकालना है, प्रथमे আমরা কি বাই করতে হইব, ডিটারমিনেন্ট অফ a। তো ডিটারমিনেন্ট অফ a ইকুয়ালস টু ডিটারমিনেন্ট অফ 5 7 4 6, 5 7 4 6, तो 5 6 जा 30 minus 5 7 28 28 equals to what, 2. It is not equals to 0. It is not equals to 0. So here, so determinant of a not equals to 0, so the system is what, bolo, so the system is what, so the system is consistent, so the system is consistent and it has unique solution, and it has unique solution, and it has what, unique solution. Clear? and it has unique solution given by, कहां से मिलेगा, कोई का पाएगा, given by x equals to a inverse into b. It is a unique solution given by x equals to what, a inverse into b. Clear? Okay. Now अभी हमको क्या निकालना है सर, adjointed. a inverse माने adjointed by determinant of a. तो let मैंने बोला सर, let Cij denotes the cofactor of Aij, cofactor of the elements Aij in capital A. Clear? Therefore C11 बोलो a की ऐसे लो, बोलो a क्या था, बोलो 5 7 4 6, बोलो तो 5 का क्या होगा, 1 1 पॉजिटिव, 5 का कितना होगा, डायरेक्ट बोलो 6, रो y1 कॉलम 2, 1 plus 2 what, माइनस, रो कॉलम चला गया कितना 4. क्लियर? रो 1 के था, देन रो 2 कॉलम 1, ऑड माने माइनस, तो इसका कितना होगा, बोलो 7, रो 2 कॉलम 2,
रो 2 कॉलम 2 का कितना 5 इवन होने से ऐड करने से कितना हो रहा है 4 इवन, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो कोफैक्टर रेडी का डिटेल डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन मैं समझा रहा इसलिए लिख के दिखा रहा है। तो कोफैक्टर रेडी, देयरफॉर adjoint A equals to what? adjoint A equals to what बोलो? तो रो 1 का कोफैक्टर 6 माइनस 4, रो 2 का बोलो माइनस 7 5, इसका क्या बोलो इधर की ट्रांसपोज, एडजॉइंट माने ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। तो बोलो ट्रांसपोज बोलो 6 माइनस 4 माइनस 7 5, क्लियर। तो एडजॉइंट ए रेडी, एडजॉइंट ए रेडी, ঠিক আছে ওকে ওকে। এখন দেখো तो देयरफॉर सिंस हमें क्या पता था x इक्वल्स टू व्हाट a इनवर्स इनटू b, x means what x and y, और a inverse means what adjoint a by what determinant of a into b। तो डिटरमिनेंट of a कितना मिला था 2, adjoint a कितना बोलो 6 minus 7 minus 4 5 into b बोलो b क्या था बोल, b कितना था रे b कितना था b -2 -3, b कितना था -2 -3, क्लियर। अच्छा अब क्या करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। देखो এখন খালি ইনটু হাউ টু ম্যাট্রিক্স হাউ ইউ মাল্টিপ্লাই ম্যাট্রিক্স রো ইনটু কলাম। তো -6 into -2 -12, this into this plus 21, clear। row 2 column 1 8, this into this minus 15, so we get 1 by 2 कितना हुआ बोलो 12 -12 plus 21, तो 21 से 12 कितना बोलो 9, तो आंसर इज 9। ये कितना हुआ -7, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना 9 by 2 और y का वैल्यू कितना -7 by 2, क्लियर। आ जाओ तो एग्जांपल नंबर 2, solve by matrix method, solve by matrix method, 3 variables, clear। So the given system can be written as a into x equals to b, where m is what 1 2 3, coefficient of x 1 2 3, y coefficient 1 3 minus 1 1 3 minus 1, b बोलो -1 1 minus 1, sorry 1 3 minus 1, इसका बोलो -1 1 and -7, clear। x तो वेरिएबल x y z, b means what 3 10 1 3 10 1, clear। अब हमको क्या निकालना है, এখন আমরা কি বের করব ডিটারমিনেন্ট অফ a। নাও ডিটারমিনেন্ট অফ a equals to ডিটারমিনেন্ট অফ 1 1 -1 2 3 1 3 -1 -7, clear। तो 1 into 3 1 -1 -7 -1 into 2 1 3 7, प्रॉपर्टी भी यूज करके छोटा कर सकता है, मैंने नहीं किया। -1 into 2 3 3 -1, clear। that is we get 1 into -21 plus 1 -1 into -14 -3 -1 into -2 -9, clear। अच्छा मैंने गलत नहीं किया, तो 21 में से प्लस -14 -3 -2 -9, तो we get here -20, here 17 or here plus 11, is not it? So we get 27 minus 20, that is 7, that is not equals to 0. So the system is what? So the system is consistent and it has unique solution given by क्या था a x equals to what, given by x equals to a inverse b, clear। तो 7 not equals to 0, determinant of a cannot be 0, so the system is consistent and it has unique solution given by x equals to a inverse b, clear। 17 plus 11 28, 28 minus 28 not equals to 0, so the system is what, consistent and it has unique solution given by x equals to a inverse b, ठीक है ओके। तो अब मुझे क्या निकालना है एडजॉइंट,
Now we have to find what? Adjoint A. Adjoint A means what? Cofactor. पहले क्या निकालना है? Cofactor. Okay. तो देखो let Cij denotes the cofactor of elements Aij in capital A. Clear? तो therefore शुरू किया मैंने पहले रो 1 का, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, then रो 1 कॉलम 3. 1 plus 1 even positive. रो गया, रो and column suppressing, we get 3 1 minus 1 minus 7, that is we get minus 21 plus 1, that is we get minus 20. Clear? Then 1 plus 2 what माने minus. सेकंड का बोलो, रो गया कॉलम गया 2 1 3 minus 7, so we get minus 14 minus 3, that is we get 17. Clear? 1 plus 3 even and it will be positive. 2 3 minus 1, that is we get minus 2 minus 9 minus 11. तो रो 1 का कोफैक्टर रेडी. नेक्स्ट मुझे किसका निकालना है? रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3. तो ऑड माने नेगेटिव. रो 2 कॉलम 1 1 minus 1 minus 1 minus 7, 1 minus 1 minus 1 minus 7, तो कितना होगा बोलो? minus 7 minus 1, that is 8. Clear? रो 2 कॉलम 2 even, रो 2 कॉलम 2 1 minus 1 3 7, 1 minus 1 3 minus 7, 1 minus 1 3 minus 7, कितना आया बोलो? minus 7 plus 3, that is minus 4. Clear? Then row 2 column 3, 1 1 3 minus 1, 1 1 3 minus 1, that is we get minus 1 minus 3, that is minus 4 माने 4. Clear? row 2 says. Then row 3 column 1, row 3 column 2, row 3 column 3, even it will be positive. बोलो row 3 column 1, a gelo 1 minus 1 3 1, 1 minus 1 3 1, that is we get 1 plus 3, that is 4, it will be what? Minus. बोलो row 3 column 2 बोलो 1 minus 1 2 1, 1 minus 1 2 1, that is we get 1 plus 2 3 means minus 3. अच्छा row 3 column 3 बोलो 1 1 2 3, 1 1 2 3, 3 minus 2, that is 1. Clear? So cofactor of row 1 row 2 and row 3 ready. तो अब देखो, तो therefore adjoint A निकाल लेते हैं पहले. बोलो adjoint A बोलो, रो 1 का बोलो minus 20 17 minus 11 8 minus 4 4 8 minus 4 4 4 minus 3 1, 4 minus 3 1 whole transpose. Clear? So we get minus 20 17 minus 11 8 minus 4 4 4 minus 3 1. Adjoint A ready? Adjoint A ready. अच्छा adjoint A ready. Therefore x equals to what? A inverse into B. A inverse means what? Adjoint A by determinant of A. Determinant of A कितना था? 8. तो 1 adjoint A by determinant of A. Determinant of A कितना आया? 8. मतलब 1 by 8 into A adjoint A बोलो minus 20 17 minus 11 8 4 8 minus 4 4 4 minus 3 1. Clear? Into what? B. B means what? 3 10 1. 3 10 1. Clear? Clear तो? Okay. अब देखो, तो first of all you have to multiply row column this into this minus 60 plus 80 plus 4. row 2 column बोलो 53 3 17 जा 51
minus 40 minus 3 minus 33 plus 40 plus 1. So we get 1 by 8 into 84 minus 60, that is 24. 43, 51 से 43 गया तो 8 और इधर कितना 440 8. So here is 8 and this one 41 से 33 11 8 8 ये भी 8. Clear? तो 1 by 8 से divide 3 8 जा 24 1 1. Clear? तो अभी देखो तो हमें कितना मिला x का मतलब क्या था x y z equals to 3 1 1. So therefore x equals to what 3 y equals to 1 z equals to 1. Clear? यहाँ अब देखो आंसर सही है या गलत we verify by putting any equation. तो तुम लोग का इक्वेशन क्या था पहला वाला x plus y minus 3 equals to कितना था 3 था sorry minus z equals to 3. So what is the value of x 3 plus what is the value of y 1 minus what is the value of z 1. तो ये चला गया 3 left hand side equals to right hand side, so it is true. So clear? Solve any simultaneous equation by matrix method. Clear? देखो तुम लोग का मैंने होमवर्क दिया था, तुम लोग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई. मैं संडे तक चेक करेगा सर, जिसका जो प्रॉब्लम है प्लीज दो और मैं कल होमवर्क फिर ऐड करूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू.